Good morning, dear friends. In today's video, I will discuss again the concept of missing frequencies in the continuous series. I will discuss the illustrations regarding when one missing frequency and two frequencies are missing there. Today, I will discuss the illustration regarding missing frequencies in continuous series. Firstly, I will discuss the problem when one missing frequency, that is, find the missing frequency if arithmetic mean is 28 from the following data: profit per shop, that is profit per shop. Then there is a number of shops. This is continuous series 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Number of shops, there is 12, then 18, then 27. Here is missing frequency, that is question mark, that means value is not given, 17 and 6. This is our number of shop is our frequency column. So I can put here F1. Now I have already discussed that for the missing frequency, direct method is the best method. So I will use this method. X bar is equal to sigma fx upon sigma f. So how we will calculate fx? Firstly, I have to calculate x. This is the continuous series. That means I have already discussed. That means lower limit plus upper limit divided by 2. इन दोनों को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करोगे, you will get the x value. 10 plus 20 divided by 2, 30 by 2, that is 15. Next is 25. Next is 35. Next is 45. Next is 55. Now we will formulate the column fx. Fx is 12 into 5, 60. 18 into 15, that is we are getting 270. 27 into 25, I am getting 675. 35 into F1, that is 35 F1. Then 17 into 45, 765. Then 6 into 55, there is a 330. Now I will calculate sigma f. सिग्मा एफ जब आपने कैलकुलेट करना है तो आपने F1 को सेपरेट लगा लेना है. फिर 12, 18, 27, 17 और 6 को आपने प्लस कर लेना है. जब इनको प्लस करते हैं तो आई विल गेट 80. सिमिलरली आपने सिग्मा एफ एक्स को कैलकुलेट कर लेना है. उसमें आपने क्या करना है, 35 F1 को सेपरेट लिख लेना है. तो 60 प्लस 270, 675, 765, 330 को आपने ऐड कर लेना है. तो यू आर गेटिंग 2100. So this is our sigma fx, this is our sigma f. Now I will put all these values in this formula. This is the direct method. X bar is the mean. Already mean is given. Mean is given in the statement, that is 28. 28 is equal to sigma fx is 2100 plus 35 F1 sigma f. Sigma f is 80 plus F1. Now I will cross multiply these terms. 28 into 80 plus F1 equal to 2100 plus 35 F1. 28 को जब 80 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, you are getting 2240.
28 को F1 के साथ करोगे 28 F1 इज इक्वल टू 2100 प्लस 35 F1। अब हमने क्या करना है कि F1 वाली टर्म्स को एक साइड पर ले जाना और कांस्टेंट वैल्यूज को एक जगह ले जाना। 35 F1 माइनस 28 F1। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट 140 एंड हियर 35 में से 28 गया दैट इज 7 F1। F1 is equal to 140 over 7 that is 20। तो F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। तो आई एम गेटिंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। This is our answer. This is the way how we have calculated the missing frequency. When one missing frequency is given, so this is the way. But in the mostly missing frequency cases, we have to prefer direct method. This is the best method for calculating the missing frequency. Now, I will discuss the illustration 2 where two frequencies are missing. Continuous series, two frequencies are missing. Again, direct method is the best method. I will prefer this method. So our illustration is, for example, the mean of the following frequency distribution is 62.8. That means mean is given 62.8 and the sum of all frequencies is 50. Compute the missing frequencies. So our data is class interval. Class interval is 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120. This is a class interval and frequencies are given. Frequencies are 5. There is a question mark, that means this is a missing frequency. This is a 10. There is again question mark, missing frequency 7 or 8. So that means these are two missing frequency. I can put here F1 and F2. So we will, according to the formula, we will formulate the column Fx. Before calculating Fx, firstly we will calculate X column. X is, how we will calculate X? Already discussed मैंने करा, lower limit plus upper limit divided by 2. 0 plus 20 divided by 2, you are getting 10. 20 plus 40 divided by 2, that is 60. 60 by 2, you are getting 30. Then 40 plus 100 divided by 2, you are getting 50. Then you are getting 70, or then you are getting 90, then you are getting 110. This is the X column. Now I will formulate Fx column. Fx column is, आपने F और X column को multiply कर लेना. 5 into 10, this is 50. 30 into F1, you are getting 30 F1. 50 into 10, 500. 70 into F2, 70 F2. 90 into 7, 630. 110 into 8, you are getting 880. अब हमने क्या करना है, सिग्मा एफ निकाल देना. सिग्मा एफ में क्या करेंगे, F1 और F2 को हम लोग सेपरेट लिख लेंगे. F1 प्लस F2. 5, 10, 7 और 8 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. अगर इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 30 आ जाता है. सिमिलरली हमने क्या करना, सिमिलरली हमने Fx वाले कॉलम में भी क्या करना है, 30 F1 और 70 F2 को हमने सेपरेट लिख लेना है. और ये सारी 50,
500, 630 और 880 को हमने क्या कर लेना, प्लस कर लेना। जब इनको प्लस करते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 2060। दिस इज अवर एफ एक्स कॉलम एंड दिस इज द एग्रीगेट ऑफ सिग्मा एफ। अब हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली एक फर्स्टली हम लोग इसमें पुट करेंगे, एक इक्वेशन हमें यहां से मिलेगी। देखो हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हम लोग क्या कह देते हैं, एन भी कह देते हैं, और इसका मीनिंग क्या है, टोटल सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज। जो हमने कैलकुलेट करी है सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास है 30 प्लस f1 प्लस f2, and according to the given in the statement sum of all the frequencies is 50. That means this is also sum of frequency and this is also sum of frequency. फिर दोनों को हम इक्वल रख लेंगे क्योंकि this is given in the statement, this is I have calculated. Then f1 plus f2 is equal to 50 minus 30. f1 plus f2 is equal to 20. This is the equation number 1. क्योंकि हमने दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, सो वी शुड हैव टू इक्वेशंस। सॉल्विंग टू इक्वेशंस वी कैन फाइंड आउट द टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एक इक्वेशन हमारी बन गई है और सेकेंड इक्वेशन वी विल गेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड। It's given x bar. X bar means mean. Mean is already given 62.8. Then sigma fx. Sigma fx is also given 2060 plus 30 f1 plus 70 f2. ये हमने कैलकुलेट करा है। और नीचे क्या है, सिग्मा f. This is sigma f. Sigma f, it is a sum total of frequency. Sum total of frequency एक statement में given है, that is 50. And second is we have calculated. You can use this one also, you can use this one also. But for the simplification purpose, हम लोग क्या करेंगे, हमने जो एक वैल्यू है ना 50, इसको पुट कर लेना. This will be more, then हमारी इक्वेशन जो होएगी ज़्यादा सिंपल फॉर्म में बन जाएगी. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 62.8 को जब 50 के साथ करते हैं, you are getting 3140 is equal to 2060 plus 30 f1 plus 70 f2. Then 30 f1 plus 70 f2. अब इनको दोनों को सॉल्व करोगे, you are getting 3140 minus 2060. You are getting 30 f1 plus 70 f2 is equal to 1080. 00 हम लोग कैंसिल कर देंगे. You are finally getting 3f1 plus 7f2 is equal to 108. This is our second equation. First equation, this one. Second equation, this one. This is the equation I have got from this formula. Now simultaneously solving these equations, we will get the value of f1 and f2. You can also calculate by elimination method or by substitution method. तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, from first equation से I will calculate f1. f1 is equal to 20 minus f2. f1 की वैल्यू मैंने f2 की फॉर्म में निकाल ली, इसको पुट कर दूंगी, पुट इन सेकेंड इक्वेशन. That means 3f1. f1 की जगह, ये f1 है, f1 की जगह I will put here 20 minus f2 plus then 7f2 equal to 108. 3 को जब 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, you are getting 60. 3 को f2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3f2 plus 7f2 equal to 108. Then you are getting 7 में से 3 गया, 4f2 is equal to 48. So finally f2 is 12. That means second missing frequency is 12. f2 we have got this one, and now you can put this equation, either you can put in first equation or you can put in second equation. You will get the value of f1. f1 plus f2. f2 हमने कितना कैलकुलेट करा अभी, 12. That means 12 is equal to 20. Then f1 is equal to 20 minus 12. f1 is equal to 8. This is the two missing frequencies. f1 is equal to 8 and f2 is equal to 12. These are the two missing frequencies we have got. So this is the way how we have calculated. Same process in the discrete series, same process is there. And
how we have to calculate? One equation we have to calculate from this formula, direct method, and second equation we have to formulate from this one, sum total of all the frequencies. Thank you so much. Please like my channel, share my channel and subscribe my channel. And don't forget to share with other friends also. Once again, thank you so much.